Hello dear students, Assalamu alaikum. Here is Naveed Ahmed Sahito once again before you with new topic related to exercise of reading text 3. But though, even though. Today we study about these conjunctions, how these can be used in a sentence. First of all, we must know that is a conjunction but, although, though, even if, and even though, there is no difference in their meaning. Their meaning will be same. These are used for happening state of affairs. So how the states of affairs are being happening, how actions are going to be happened, all about its. So here is main point about the usage of these. Main idea contrast. When we use but, although, or though, even if, or even though, we have to keep in our mind two things. Number one, main idea. Number two, contrast. Means is a conjunction when we use these words, but, although, though, even if, even though. The first sentence produces main idea, and the second is against it. Second will be against it because second is contrast we can say. So how the second is contrast or contrast. Here is example. Although it rained all the day, this is main idea. I had a great time with my family. It means मूंखे जेतोणीकि सॼो ॾींहुं मींहुं वसियो हिकिड़ो ही बाबा मेन आइडिया आहे. दिस इज़ द मेन आइडिया. आई हैड अ ग्रेट टाइम विथ माई फैमिली. माना मूंखे तमामु घणो वक़्तु मिलियो पंहिंजे फैमिली सां गुज़ारण जे लाइ. इहो ॿियो आइडिया आहे, सेकेंड आइडिया आहे. यानी इहो कंट्रास्ट आहे हिन मेन आइडिया जे. मेन आइडिया कंट्रास्ट. इफ इट डिड नॉट रेन ऑल द डे, आई वेंट आउट एंड आई मिस्ड माई फैमिली. सो दैट इज़ वाई although it rained all the day, I had a great time with my family. So this is all about number one, main idea and contrast. Here is another example. I like sports. This is the main idea. But I don't have time to play. This is contrast. मतलब मूंखे रांदियूं पसंदि आहिनि पर मूंखे टाइम न आहे खेॾण जे लाइ. मां रांदियुनि खे पसंदि कंदो आहियां, स्पोर्ट्स खे, पर मूं वटि टाइम न आहे खेॾण जे लाइ. I don't have time to play. It is contrast. Number 3, the mountain is high, but it is easy to climb. Here is an example. In second example, I like sports, but I don't have time to play. In third, is the same. The mountain is high. This is the main idea, but it is easy to climb. जबल तमामु ऊंचो आहे, जबल मथे आहे, जबल ऊंचो आहे, पर इहो चढ़ण में आसान आहे. हाणे ऊंचो बि आहे वरी चढ़ण में आसान. माना ऊंचो आहे, वॾो आहे, डिघो आहे, त माना हिकिड़ो आइडिया आहे. उन जे ख़िलाफ़ु जेको आइडिया आहे, कंट्रास्ट जेको आहे, उहा चवे थो पर चढ़ण में आसान आहे. दैट इज़ अगेंस्ट इट. सो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दिस पॉइंट, मेन आइडिया एंड कंट्रास्ट. हियर वी आर यूजिंग दो, although, but, even if, even though as conjunctions we must use. We must remember. Number 4, although the mountain is high, it is easy to climb. So here although and but playing same role in same sentence. Here the structure, the mountain is high, but comes here because this is the first sentence. The mountain is high, main idea, and it is easy to climb, subordinate idea, we can say subordinate class. So these two sentences are joined or connected with the word but. That is why it becomes here conjunction. Similarly, the mountain, although the mountain is high, comma, it is easy to climb. The mountain is high, it is easy to climb. These two sentences are connected with the help of although. That is why although is conjunction. Number 5, he worked hard, but he made little progress. He worked hard, this is main idea, and this is the contrast. He made little progress. हिन सख़्त मेहनत कई, पर पोइ बि तंहिंजे बावजूद बि हिन तरक़ी न कई. हिन सख़्त महिनत कई तंहिंजे बावजूद बि हिन तरक़ी न कई. इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग ही मेड लिटिल प्रोग्रेस.
लिटिल प्रोग्रेस तव्हांखे ख़बर आहे, लिटिल जो यूसेज मीन्स नॉट इनफ, नॉट इनफ, बिल्कुलु बि न, कॾहिं बि न। ही मेड लिटिल प्रोग्रेस, हिन बिल्कुलु तरक़ी न कई। सो हाणे सख़्तु महिनत ऐं तरक़ी न कई, ॿई इहे हिक ॿिए जे ऑपोज़िट आइडियाज़ आहिनि। ही वर्कड हार्ड, मेन आइडिया, he made little progress, contrast. So this is the difference. But we must remember also that this is the conjunction. Usage of but is a conjunction, although is a conjunction. Number 6, although he worked hard, he made little progress. We can use the same sentence with although as well as but. असां but सां बि इस्तेमालु करे था सघूं, although सां बि। डिफरेंस मीनिंग में कोई कोन्हे को, ॿिन्ही जी में स्ट्रक्चर में फ़र्क़ु आहे। बट तव्हां दरमियान में था रखो ऐं although तव्हां इनिशियल स्टेज में प्लेसिंग ते था रखो, इहो यादि रखंदो। हाणे आहे यूसेज ऑफ although एंड but विथ एडजेक्टिव्स। फर्दर वी स्टडी एडजेक्टिव सां कीअं इस्तेमालु था थियनि। दे वर पुअर बट ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट दो पुअर। इट मीन्स पुअर ऐं ऑनेस्ट जो कंट्रास्ट आहे, पुअर ऐं ऑनेस्ट जो कंट्रास्ट आहे। त माना उहे ग़रीब हुया पर उन जे बावजूद बि ईमानदार हुया। बट हिते माना इन स्पाइट ऑफ देट दे आर ऑनेस्ट दो पुअर, उहे ईमानदार आहिनि जेतोणीकि उहे ग़रीब आहिनि। इवन इफ दे आर पुअर, इवन दे आर ऑनेस्ट इवन इफ दे आर पुअर, दे आर ऑनेस्ट इवन दो दे आर पुअर। हाणे इवन दो इवन इफ बि हिते रखी सघूं था, हिन दो ऐं बट जी जॻह ते। देयर विल बी नो डिफरेंस इन मीनिंग। ऐं ही हिते असांजा यूसेज थी विया कंजक्शन तौरु। हाणे असां फर्दर ही था एग्ज़ाम्पल ॾिसूं। इवन इफ इवन दो खे इस्तेमालु कयूं था, स्टिल येट देन हाउ एवर, दीज वर्ड्स वी हैव टू यूज़ एज अ कंजक्शंस when we use in a sentence even if though and even if। हाणे असां जॾहिं even though इस्तेमालु कंदासीं, इवन although सां बि इस्तेमालु कंदासीं त स्टिल येट देन हाउ एवर असांखे इन्हनि सां गॾु इस्तेमालु करणा पवंदा। पर इहो यादि रखंदो त although सां येट जो इस्तेमालु थींदो आहे, येट जो इस्तेमालु although सां थींदो आहे। although सां येट जो इस्तेमालु थींदो आहे, बाक़ी ॿियनि सां स्टिल ये देन ऐं हाउ एवर इस्तेमालु थींदो। इवन इफ सां, इवन दो सां, स्टिल, देन ऐं हाउ एवर वी कैन यूज़, बट येट इज़ बाउंड टू यूज़ विथ although। बट non-native speakers of English use although with yet, but native speakers of English cannot use। बाबा अंग्रेज़ जेके हूंदा आहिनि उहे although सां येट इस्तेमालु न कंदा आहिनि। बाक़ी असां जेके नॉन नेटिव आहियूं, असां अंग्रेज़ी ॻाल्हाईंदड़ आहियूं पर असां अंग्रेज़ न आहियूं, त असां इस्तेमालु कंदा आहियूं। पर इहो मां तव्हांखे ॿुधायां, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इफ यू फाइंड अ क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर दैट you have to use with although yet or not, you must avoid of yet. This is the main point. Instead of yet you can use comma। पेपर में तव्हांखे although सां yet न इस्तेमालु करणु घुरिजे, छो जो टेक्स्ट बुक में although सां yet जो इस्तेमालु कोन्हे को। ही त नॉन नेटिव स्पीकर्स जेके इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं उहो असांजो हिकिड़ो लोकल सतह ते इस्तेमालु थींदो आहे, इहो असांखे यादि रखिणो पवंदो। हाणे हिन खां पोइ हे एग्ज़ाम्पल्स आहिनि। इवन इफ शी वॉज इनोसेंट स्टिल शी एपोलोजाइज़। हाणे दिस इज़ द मेन आइडिया। शी वॉज इनोसेंट, शी एपोलोजाइज़। जेतोणीकि उहा मासूम हुई तंहिं हूंदे बि हुन माफ़ी वरिती। शी वॉज इनोसेंट, शी वॉज नॉट गिल्टी। इवन इफ, हाणे हिते असां दो लिखी सघूं था, दो शी वॉज इनोसेंट स्टिल शी एपोलोजाइज़। पर जेकॾहिं हिते असां although लिखंदासीं, although शी वॉज इनोसेंट, पोइ हिते लिखंदासीं येट शी एपोलोजाइज़। दैट इज़ द डिफरेंस। हाणे चवंदा इवन दो, एग्ज़ाम्पल, इवन दो ही वॉज रिच हाउ एवर ही डिड नॉट हेल्प द पुअर। जेतोणीकि हू अमीर हुयो तंहिं हूंदे बि हिन ग़रीबनि जी मदद न कई। दिस इज़ द मेन आइडिया एंड दिस इज़ द कंट्रास्ट। रिच ऐं रिच त आहे पर कंट्रास्ट आहे, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर। दैट इज़ द डिफरेंस। although he was rich yet he did not help the poor, the same structure। इवन दो जी जॻह ते असां although इस्तेमालु कयोसीं, हाउ एवर जी जॻह ते असां येट इस्तेमालु कयोसीं। मीनिंग सेम आहे।
though I am ill, still I can take the class. जेतोणीकि मां बीमार आहियां पोइ बि मां अञा क्लास वठी सघां थो, पोइ बि मां क्लास वठी सघां थो, अञा ताईं मां क्लास वठी सघां थो. Even if she was unwell, then also she cooked the food. जेतोणीकि उहा बीमार हुई पोइ बि हुन खाधो पचायो. Then also she cooked food. हाणे हिते कंजक्शन देन थी वियो. हाणे इवन इफ सां वाज़ ई पवंदो, मथां तव्हां मिस्टेक कयो त वर पवंदो, या इवन दो सां वर पवंदो, न वाज़ वर सेम. Even though he is illiterate, yet he behaves well. जेतोणीकि हू अणपढ़ियल आहे पर पोइ बि हू सुठे नमूने वर्ताव करे थो, सुठे नमूने हुनजो रवैयो बहितर आहे, वेल आहे, पर इलिटरेट आहे. But used as preposition. Further we study about but as a preposition. There it means except. हिते असांजी except में मीनिंग ॾींदी आहे. Although students, all the students, but one have passed the examination. स्ट्रक्चर खे नोट कंदो, वेरी इंपॉर्टेंट आहे. All the students but one लिखियल आहे, have. हाणे ही बट थी वियो पर वन ॿिनि सां कनेक्टेड आहे. बट वन पोइ छा आहे, हैव पास द एग्ज़ामिनेशन. हैव छो आहे, इन जे करे आहे त ही सब्जेक्ट आहे ऑल द स्टूडेंट्स. ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट हैव पास द एग्ज़ामिनेशन. मतिलबु त हिक खां सवाइ सभिनी शागिर्दनि इम्तिहान पास कयो आहे, सभिनी शागिर्दनि इम्तिहान पास कयो आहे हिक खां सवाइ. तंहिंजे करे हिते हैव पवंदो, हेज़ न, ग़लती थी वेंदी. यू मस्ट स्पीक नथिंग बट द ट्रुथ. तव्हांखे ज़रूरु सच ॻाल्हाइणु घुरिजे, पर सिर्फ़ु सच ॻाल्हाइणु घुरिजे. नथिंग बट जो मतिलबु आहे ओनली. नथिंग बट जो मतिलबु आहे ओनली, यानी यू मस्ट स्पीक ओनली ट्रुथ. प्लीज़ टर्न टू द लास्ट बट वन चैप्टर. महिरबानी करे लास्ट वन जेको चैप्टर आहे उन खां सवाइ जेको ॿियो चैप्टर आहे उहो खोलियो. प्लीज़ टर्न टू द लास्ट बट वन चैप्टर. जेको वन चैप्टर उन खां सवाइ लास्ट जेको अचे उहो खोलियो, उनखे टर्न कयो. इहो आहे हिते असांजो एक्सेप्ट, माना लास्ट वन खां सवाइ ॿियो चैप्टर खोलियो. इहो एक्सेप्ट जी मीनिंग थो ॾे. देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, इहो बि प्रेपोजिशन आहे, 9th क्लास में आहे सेंटेंस. देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह. हाणे इन खां पोइ बट फार जो यूज़ आहे कनेक्टेड बट सां प्रेपोजिशन, जंहिंजो मतिलबु आहे एक्सेप्ट फॉर समबडी समथिंग. कंहिं माण्हूअ या कंहिं शइ जे बावजूदि, उन खां सवाइ. हाणे ही वुड हैव डाइड बट फॉर द स्किल ऑफ हिज डॉक्टर्स. माना जेकॾहिं हिन डॉक्टर जो स्किल न हुजे हा त ही मरी वञे हा. ही वुड हैव डाइड, ही मरी वञे हा, बट फॉर द स्किल ऑफ हिज डॉक्टर. पर जेकॾहिं डॉक्टर जो हुनर न हुजे, डॉक्टर जी महारत न हुजे हा त ही मरी वञे हा. इन जो मतिलबु आहे एक्सेप्ट फॉर द स्किल ऑफ हिज डॉक्टर मीन्स विदाउट स्किल ऑफ हिज डॉक्टर ही वुड हैव डाइड. डॉक्टर स्किलफुल न हुजे हा त ही मरी वञे हा. इहो आहे बट फॉर जो यूसेज. बट फॉर मीन्स एक्सेप्ट फॉर समबडी, माना ड्यू टू डॉक्टर ही इज़ अलाइव, डॉक्टर ट्रीटेड हिम वेल, दैट इज़ वाई इट्स ऑल अबाउट even if even though but though also. So this was the topic and I sum up here. So see you again in next topic inshallah. Allah Hafiz.